Okay. Thank you. So welcome everyone. We'll start today again the MCQ based questions of Indian geography. So as we know, the essence or the importance of such MCQ discussions that we are much more analytical, and we are discussing every aspects of the subject. So Indian geography in your civil service is particularly having much importance, very vital for this to know. Okay, let's start now. Where is the Loktak Lake situated? The question is, where is the Loktak Lake situated? Okay, it is Kerala, Uttarakhand, means Uttaranchal, Manipur and Rajasthan. As every discussion we used to do what, after every two successive questions we will discuss. Okay, likewise the same thing. After every two successive questions we will discuss the answers. Okay, so let's discuss now. Where is the Loktak Lake situated? Kerala, Uttaranchal, Manipur and Rajasthan. Here. So here answer is your, it is C, Manipur. We'll discuss this one, Loktak Lake. Then next. Which among the following water bodies separates the Andaman from the Nicobar Islands? Okay, following water bodies separates Andaman from the Nicobar Island. 11-degree channel, Gulf of Mannar, 10-degree channel and your Andaman Sea. Which are the following water bodies? Andaman from the Nicobar Island. It is your answer is your C, that is 10-degree channel. Let's now discuss now. First यदि हम देखिए लोकटाक लेक ऊपर लोकटाक लेक जदि कहबा, it is the largest fresh water or sweet lake in northeast India. जोटा को कहते, it is also called only floating lake in the world and only floating lake due to the floating foam dish. Foam dish माने particularly जोटा कहू माने heterogeneous mass of vegetation, soil, organic matters at various stages. Vegetation, soil and organic matters at various stages of decompositions. जोटा कि कहती तमरा दल गाड़िया, जोटा कि हम ओडिया को कौन, that is दल, माने particularly हमें दल बोली को, दल. Okay, and it's located near the mooring in Manipur state in India. The etymology of Loktak is Lok means stream and Tak means the end. Lok means stream and Tak means the end. Loktak ताको कहते. Next देखियो the Cable Lampshaw National Park. ठीक है जी. The Cable Lampshaw National Park, which is the last natural refuge of the endangered Sangai. Cable Lampshaw National Park जोटा कि कहते जो थ्री की तुमको मागुरी कहबी एटा हला तमरा one is this is your one of the only one floating lake, Cable Lampshaw National Park. This is natural refuge of the endangered Sangai or the Manipur bro, that is antlered deer. Deer टा माने गोटे हरिण देखा जाए, antlered deer जोटा कि barking deer भी कहते, जोटा कि केवल Cable Lampshaw रे माने स्पेसिफिकली देखा जाते है. जोटा कि तार zoological name is Cervus LD, one of the 3 subspecies of LD's deer, which covers an area of 40 square kilometer. This covers an area of 40 square kilometer, is situated in the southeast shores of this lake.
and is the largest of all the foam days in this lake. Largest of all the foam days in the lake. ठीक अच्छे ओके केबुल लैम्जो नेशनल पार्क को भी तमर जदि कहबो केबुल लैम्जो नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे मैं कह दूची नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया रे दिस इज वन ऑफ द है ना ओनली वन नेशनल पार्क जोटा कि योर फ्लोटिंग माने मन रखो भासमान जोटा कहते है ना मणिपुर कैपिटल इट इज इम्फाल है ना मणिपुर कैपिटल है इम्फाल ओके जस्ट 1 सेकेंड नेक्स्ट हम डिस्कस करियो योर that is 10 degree channel question our कौन थिला क्वेश्चन जदि हमें देखिबा कि अंडमान और निकोबार को किए सेपरेट कर क्वेश्चन हमर एटा थिला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार देन इट इज 10 डिग्री चैनल है 10 डिग्री चैनल जदि हम कहबी द 10 डिग्री चैनल is a channel that separates the little Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal है ना separates the little Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal. The two sets of islands together form Indian Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands particularly. जदि हम जानछंती जदि मैं इंडिया डायग्राम टा बनौछि है ना this is your Andamans and this is your Nicobar है ना Andamans एटा टिके आउ के तळ भी हेगला जस्ट इटा this is better this is your Andaman and Nicobar ठीक है this channel is 150 km wide. It is said that when western trade winds was used by the Arabians, they crossed through this channel in the 15th century है ना अंडमान और निकोबार जब तुम देखियो they are separated है ना यदि एटा निकोबार हुए this is अंडमान हुए है ना आओ इटा ला निकोबार है ना this is निकोबार this is अंडमान and this is निकोबार है ना गोटे अंडमान आउट है ना डाला निकोबार नेक्स्ट देखियो which of the following river has the largest river basin in India है ना largest river basin India रे किए Indus गंगा ब्रह्मपुत्र and Krishna Indus गंगा ब्रह्मपुत्र और कृष्णा क्या भितर largest river basin India रे Indus की गंगा की ब्रह्मपुत्र की कृष्णा आंसर इज योर देखियो इट इज योर है ना गंगा ठीक है आंसर इज योर गंगा नेक्स्ट देखियो which among the following states or union territory is located in and located the Banihal Pass ठीक है जी following state or UT is located in the Banihal Pass कोथरे Banihal Pass जेमती पास माने हैला तमरो गोटे
माने गोटे माउंटेन दीटा माउंटेन भितरे माने कोन थो गोटे छोटिया रास्ता थियो नैरो हैला पास माने कहबो इट्स एन नैरो लिखि नियंतु narrow route among narrow route among the mountains mountains with a narrow route जोटा कि बनिहाल पास है माने गोटे रास्ता नैरो रूट और नैरो चैनल इट इज देन Jammu Kashmir, Himachal, Uttarakhand and Sikkim. So your answer is your here. It is Jammu Kashmir. है states or UT. वर्तमान Jammu Kashmir तो आउ state नहीं. Jammu Kashmir is now as an state. Here is an union territory. है Jammu Kashmir is an union territory now. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए आंसर देखिए यार गंगेश कथा हम जदि कहबी द गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट वन इन इंडिया ओके द गंगा originates from the Gangotri situated in the glaciers of Bhagirathi the Ganga basin is a part of Ganges Brahmaputra basins which is draining 10,86,000 square kilometer in Tibet Nepal India Bangladesh particularly है 10,86,000 मैंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर है स्क्वायर किलोमीटर 1000 किलोमीटर स्क्वायर और स्क्वायर किलोमीटर वट एवर इन तिब्बत माने चाइना रे नेपाल इंडिया और बांग्लादेश पर्टिकुलर टू द नॉर्थ द हिमालय और लोअर पैरेलल रेंजेस बियॉन्ड फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र डिवाइड ठीक है जी ऑन द जदि हमें देखिए ऑन द वेस्ट ऑफ द गंगा बेसिन बॉर्डर्स द इंडस बेसिन्स एंड देन द अरावली रेंज ऑन द वेस्ट ऑफ द गंगा है गंगार जदि हम वेस्ट देखिए है बॉर्डर्स द इंडस बेसिन दिस इज अरावली गंगा हमर एमती बहुत वेस्ट वाला दिस इज your Aravalli Ganga Indus ठीक है जी and then Aravalli ठीक है जी to the north the Himalaya and the lower parallel ranges beyond the from the Gange Brahmaputra divide particularly ठीक है जी जदि देखो जदि इटी मन रे तुमर क्वेश्चन उठथो सर हमर तो we can say कहीपर कि ब्रह्मपुत्र तो इतने बड़ नदी है किंतु जदि मु कहि ब्रह्मपुत्र जदि मु कहि ब्रह्मपुत्र ठीक अछि ब्रह्मपुत्र इन द सेंस जदि देखियो तमे इज द लॉन्गेस्ट नो डाउट इट इज द लॉन्गेस्ट बट जदि तमे देखियो माने गंगेस्ट इन कंपैरिजन टू गंगेज इट इज लॉन्गेस्ट बट मैक्सिमम flow of Brahmaputra is in China चाइना रे ही तार मैक्सिमम फ्लो ब्रह्मपुत्र रो ठीक अछि ओके Next देखिए फोर्थ इन which among the following states or UT located the Banihal Pass Banihal Pass वर्तमान हमारा कोठी is a mountain pass across the Pir Panjal range at 2832 meter है
जोटा कि maximum elevations. The mountain range connects Kashmir Valley in the Indian UT of Jammu and Kashmir to the outer Himalaya and plains to the south. ठीक है, बनियाल पास कौन होचे across the Pir Panjal range जोटा कि 2832 मीटर maximum elevation. The mountain range connects the Kashmir Valley in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir to the outer Himalaya and plains to the south. ठीक है जी, Kashmir Valley in the Indian UT of Jammu and Kashmir and to the outer Himalaya to the plains to the south particularly. बनिहाल पास बर्तमान जदि तुम कहबो कि एक्चुअली तार एक्सटेंशन बर्तमान कश्मीर रु है ना तुमरा पर्टिकुलरली कश्मीर वैली रु बर्तमान एक्सटेंशन है कि मनाली माने तुमरा हिमाचल आ एपटे हेगन तुमर कोठी ले है ना ले लद्दाख माने तुम एडी जो तुम करिवि इफ आई ड्रॉ ए डायग्राम हियर इट विल बी मोर क्लैरिटी है बनिहाल पास सपोज मेडनेली आ जो तुम करिवि एठी हला ले सॉरी ले एठी कश्मीर वैली and here it in Manali. ठीक है, बर्तमान जमी अटल टनल होची है दे आर द लैंडमार्क अचीवमेंट्स. नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन. Which among the following was the first person? Which among the following was the first person to scale Mount Everest without supplemental of oxygen? Terence Bannon, Duncan Sell, Reinhard Messner and Jean Troilert. Answer is your C, that is Reinhard Messner. C is your answer. Next we'll discuss it again. Through which of the following states Chambal River does not flow? Chambal River flow karuni. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात. है कहाँ भीतर देखी चंबल रिवर पास करनी एटा तो केबे भी उत्तर प्रदेश देखी जाउची चंबल. मध्य प्रदेश मेन उत्तर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश रहिला. हमें केमती एलिमिनेट करियो राजस्थान और गुजरात भीतर आ भीतर आंसर हो है ना. नॉट फ्लोइंग राजस्थान रे जाउची से राणा प्रताप सागर डैम करूची तो आंसर फ्लो करूनी चंबल कोठी इडी गुजरात. तो आंसर कोन हो एटा योर गुजरात है ना. माने सबुथिरे फ्लो करछे तीनटा रे फ्लो करछ एथिरे फ्लो करूनी गुजरात. ठीक अछि. सो आंसर इडी कोन दैछि डज नॉट फ्लो. मन रखो आंसर सब देखियो कोन दैछि डज नॉट दैछि है ना. देखियो तो आंसर इज योर कोन है D for Delhi. Next, the Chambal River is a tributary of the Yamuna River. Yamuna River tributary. The river flow northeast through Madhya Pradesh, running from time through Rajasthan, then forming a boundary between Rajasthan and MP. Rajasthan और MP भीतर ये boundary formation करछि before turning southeast to the giant Yamuna in Uttar Pradesh. Okay, Chambal River, tributary Yamuna River. Then next देखिए चंबल रिवर उपरे तमर जदि देखिबा राजस्थान रे मुझे कहउतली जो राजस्थान के तमरा राणा प्रताप
सागर डैम अच्छी है राणा प्रताप सागर डैम अच्छी राजस्थान रे देन एठी अच्छी तुमरा देन एठी जदि तमे देखियो राणा प्रताप सागर डैम आउ राजस्थान रे देन एठी अछि गोविंद सागर डैम गोविंद sorry I'm sorry it is not Govind Sagar this is mane Gandhi Sagar dam it is Gandhi Sagar dam right Gandhi Sagar dam ठीक है गांधी सागर डैम अच्छा गांधी सागर डैम टा जदि देखियो गांधी सागर डैम ए चंबल रिवर ऊपर इट इज इन द मध्य प्रदेश है नेक्स्ट देखियो रेनल्ड मेजनर ए जर्मन है जर्मन इज द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है विदाउट ऑक्सीजन रे measure along the Peter Handler 1978 he is also the first climber to ascend all 14 peaks over 8,000 meters all 14 peaks over 8,000 meters above the sea level including the Mount Everest ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए Sirhind Canal is located on which river? Satluj, Ravi, Bees, and none of this. Sirhind Canal कोठी अछि Satluj, Ravi, Bees, और none of these. Okay. It is a Satluj river. ठीक है जी The Chamera dam is located in which state? Chamera dam Puducherry, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Jharkhand वन बाय वन डिस्कस करिए सिरहिंद कैनाल सतलज में पाइला Chamera dam in which state? Puducherry, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand रे ठीक है Chamera dam जो देखियो Chamera dam it is Chamera dam which is in the state of it is your Himachal Pradesh okay देखियो हम डिस्कस करियो एटा के डिस्कस करदो Sirhind canal जो देखियो is a large irrigation canal that carries water from Satluj river in the Punjab state. Satluj river pani nochu Sirhind canal. It is one of the oldest and biggest irrigation works. One of the oldest and biggest irrigation works in the Indus river system and was inaugurated in 1882 AD. ठीक है Sirhind canal is a large irrigation canal that carries water from the Satluj river in Punjab state in India. It is one of the oldest and biggest irrigation works
work in the Indus River system, Seriant Canal, was inaugurated 1882 मसीह होता जोटा कि आमर प्री इंडिपेंडेंस टाइम समय. The canal begins at Ropar, at Ropar headworks near Ropar city in Roopnagar district of Punjab, particularly Roopnagar district Punjab re हेतला आरंभ हेतला एटा रूपनगर डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट आम देखा डिस्कस करिया हिमाचल प्रदेश रे the Chamera Dam is located near the town of Dalhousie in the Chamba district of Himachal Pradesh. In the Chamba district of Himachal Pradesh, Chamera Dam is located near the Dalhousie town of Dalhousie in the Chamba district of Himachal Pradesh. It impounds the river Ravi and supports the hydroelectricity HEP project in the region. The reservoir of the dam is the Chamera Lake. This is a question already. This is very important thing. Chamera Dam located near the town of Dalhousie. Dalhousie is an hill station also in the Himachal Pradesh. Dalhousie, in the Chamba district of Himachal Pradesh. It impounds the river Ravi and supports the hydroelectricity project in the region. Okay, the reservoir of the dam is Chamera Lake. The reservoir of the dam is the Chamera Lake, particularly Chamera Dam or Chamera Lake. The unique feature of the regions in the fluctuating day and night temperature is the temperature during day near the dam. It rises up to 35 degrees Celsius and drops to a minimum 18 to 20 degrees centigrade at night. The water level of the Chamera Lake is rise to, this is the additional information I am saying. Chamera rises to a maximum 763 meters, while the minimum level water levels to it is your 747 meters. 763 to 747 meters. 763 to 747. Next, which of the following? Yes, we have completed. Then next important which of the following river is known as the Padma when it enters the Bangladesh? Padma when it enters the Bangladesh. Brahmaputra, Ganga, Tista, Mahanadi. बांग्लादेश रे पद्मा कहना है तीस्ता और ब्रह्मनदी तो नुह रहा ब्रह्मपुत्र गंगा है क्या भितर हम योर आंसर इज योर बी फॉर बॉम्बे इट इज गंगेज है विल डिस्कस नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वर्ल्ड्स 25 थोरियम रिजर्व्स maximum thorium reserves. Thorium is one of your radioactive element which used for your generation of electricity from it is an particularly electricity. It's a radioactive element particularly. India, China, US, Russia. Answer is your none other than our country. It is India. वर्तमान देखिए
See, Ganga जो देखिवा, the Padma or the Podda in Bengali is a major river in Bangladesh and India downstream of Giria. It is the main distributary of the Ganga, flowing generally southeast for 120 km. Okay. The confluence with the Meghna river near the Bay of Bengal, the city Rajasthan is situated near the bank of the river. But जब मैं कहिबी इटी भला भाबे गोटे डाउट टाइम मन रखिबा गंगा बांग्लादेश रे काहर को ना गंगार जदि ना देखियो इंडिया रे तना आला पद्मा ब्रह्मपुत्र तना इट इज here जमुना है गंगा रहा पद्मा ब्रह्मपुत्र रहा जमुना the city Rajasthan जदि एटा हला तमर एटा मन रखियो आ गंगा और ब्रह्मपुत्र माने मिसी की तांका ना हिची कोन मेघना हैला ए जो मेघना ना देखियो ए मेघना ना हला माने मिसी की गंगा ब्रह्मपुत्र ना हिची मेघना अच्छा नेक्स्ट देखियो India has modest uranium reserves जदि तमे देखियो थोरियम रिजर्व्स ऊपर किए India has modest uranium reserves where it has one of the largest thorium reserves in the world. It has the largest thorium reserves in the world. Thorium, despite its greater abundance in nature and a number of superior characteristics. Thorium, despite its greater abundance in nature and a number of superior characteristics. The fertile thorium 232 has to be converted into uranium 233. Thorium 232 has to be converted into uranium 233. First, for the use in a nuclear reactor, deposits dominated Koku state re Jharkhand. ये मु diagram टा करते better है. West Bengal किछि कोस्टल जगह रे अछि West Bengal then हमरो Odisha this is Jharkhand this is your West Bengal this is Odisha Andhra Pradesh then Tamil Nadu and this is your Kerala. It is thorium deposits have greater abundance in nature and a number of superior characteristics. Thorium 232 has to be converted into uranium 233. A thorium रो कौन होची रिजर्व रे थोरियम रिजर्व जोटा कि हमरो थोरियम माने how you write TH232 to be converted into uranium 233 है एटा गोटे आइसोटोप्स रे कोन यूज एटा न्यूक्लियर रिएक्टर रे यूज होची है न्यूक्लियर रिएक्टर कोड में फॉर जनरेटिंग पावर है पावर जनरेटिंग पे एटा यूज यूरेनियम से जो थोरियम 232 रु यूरेनियम 233 यूज होची
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए the arid forces research institute is located at Koti, Rajasthan, Haryana, Punjab and Kerala. Arid forces research institute वो जगह है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और केरला. इट इज आंसर इज योर ए राजस्थान. arid research institute है ना. सॉरी के टाइप रे हेछि एटा फॉर कोर्सेस नो इन फॉरेस्ट सीटा पड़े आसी टीटा कटि जाइछि. नेक्स्ट bring out the incorrectly matched pair. Biral project हिमाचल प्रदेश है ना. देन सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर. देन तानपुर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश. कोयल कारो प्रोजेक्ट बिहार. आ भितरु किया भितरु इनकरेक्टली मैच्ड. आंसर इज योर डी. विल डिस्कस सब देखियो डिस्कस करियो. अच्छा वर्तमान देखियो हमें एनालिसिस टा. राजस्थान एट जोधपुर है ना. देखियो दिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टडी मेनली द क्लाइमेटिक फेनोमेना ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड कंट्री एज ए होल. दिस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टडी मेनली द क्लाइमेटिक phenomena of western India and the country as a whole. ठीक है जी. कोयल कारो प्रोजेक्ट एक्चुअली इट इज इन झारखंड नॉट बिहार है ना. मैं डिस्कस करिया कौन कोयल कारो प्रोजेक्ट इज इन झारखंड. एक्चुअली झारखंड रे South Koel rivers that runs across the Jharkhand and Odisha states of India. South Koel. It originates on the Ranchi Plateau, a few miles of east of Ranchi and co-joins the Belsai Nagar and Singhbhum rivers. The Koel is fed by 3 streams in Jharkhand. Koel is fed by 3 streams in Jharkhand, namely as North Karo, South Karo and Koyna. North Karo, South Karo and Koyna. The South Koel enters Odisha and joins the Sank River at Vedabas near Raurkela. South Koel enters Odisha and joins the Sank River at Vedabas near Raurkela, from where it is named as Brahmani. ठीक है जी है ना. कोयल और संख मिसी कौन होती ब्राह्मणी रिवर. This is your Sank Koel और इटा ला तुम्हारा ब्राह्मणी रिवर है ना.
अच्छा बर्तमान जदि आम एटा डिस्कस करिया these are the correct Baira Civil project Himachal Pradesh, this is correct answer है हिमाचल प्रदेश. सोलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर ठीक अच्छे एंड तानकुरा इन उत्तर प्रदेश है तानकुर प्रोजेक्ट इज एगुड़ा सब तुम्हारा करेक्ट आंसर्स बायरा सिलुल सोलाल प्रोजेक्ट एंड तानाकुर प्रोजेक्ट है दिस आर द करेक्ट आंसर्स. नेक्स्ट देखिए the water comes to Indira Gandhi Canal from the following rivers. Which one? The water comes to Indira Gandhi from the following rivers. Satluj Koko river है Satluj only, Satluj Bees and Ravi, Satluj, Bees, Ravi and Chenab. Which one? The water comes to Indira Gandhi Canal from the following rivers. Which one? Satluj, Bees, Ravi and Chenab. Your answer is your Indira Gandhi Canal. This Satluj and Bees. B for Bombay. We'll discuss this one. Which among the following state in India has the highest production of large cardamom? Cardamom माने हमारा अलैची जो रामी खाते है ना इलायची. We'll call it as an इलायची. Your answer Sikkim, Assam, Gujarat, Kerala. It is answer is your it is Sikkim. Kerala रे जदि इदिटा तो इटा केबे भी नो आसाम और गुजरात रे सिक्किम और केरला भीतर देखले लार्ज कार्डामम जोटा होवे सेटा हला तमरो सिक्किम रे है ना. एटी में देखियो द इंदिरा गांधी कैनाल originally राजस्थान कैनाल कहा जाए. इंदिरा गांधी कैनाल को originally राजस्थान कैनाल कहा जाए. is the longest canal 650 km of India. It starts from Harike barrage at Harike है ना starts from the Harike barrage at Harike few kilometers below the confluence of Satluj below the confluence of Satluj and Bees river in the Indian state of Punjab and terminates in irrigation facility in the Thar desert in the northwest of Rajasthan state. Is the Rajasthan canal is the longest canal 650 km of the India. जदि मैं एक डायग्राम करछि जदि समस्त पाखरे अछि एटलास टा इट वुड बी वेरी जस्ट लुक एट हियर. राजस्थान कैनाल टा तमरो पंजाब रो हरिकेड बाहरी की ऑफ टू इट गंगानगर सॉरी 8 पर्यंत तमरो जाउ गंगानगर. दिस इज द एरिया नियर अबाउट 650 km. दिस इज योर राजस्थान कैनाल. तापरे इज डेडिकेटेड टू द our other than former Prime Minister Miss Indira Gandhi है ना जोटा कि कहा होची राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल. The longest canal 650 km starts in the Harike barrage Harike few kilometers below the confluence of Satluj and Bees है ना a river in the Indian state of Punjab and terminates in the irrigation facility in Thar desert in the northwestern Rajasthan state.
Then the large cardamom जो देखियो is cultivated in the large cardamom is cultivated in the sub-Himalayan region of the northeastern India, Nepal and Bhutan. Hala? Large cardamom is cultivated in the sub-Himalayan region of northeastern India, Nepal and Bhutan. It is grown in the cold humid conditions under the shade of trees at an altitude 800 to 200 meters above the mean sea level. Okay, with an average precipitations of 3000 to 3500 mm spread over 200 days and with temperature ranging from 6 to 30 degrees centigrade. Sikkim red hoche large cardamom jota ki sub Himalayan region of northeastern India hoche Nepal Bhutan. It is grown in the cold and humid conditions under shade of trees and altitude to 800 to 200 meters above MSL mean sea level with an average precipitation of 3000. So जदि cardamom देखियो cardamom जोटा कि हमें ओडिया रे कहू that is called your अळैचो जोटा कहू हैला गुजराती नाम कहू cardamom तमर मन रख केरला रे भी होची सिक्किम रे भी होची तमिलनाडु रे भी होची हैला माने टिके जोटी वर्षा होथो टिके मॉइस्ट थिवो और माने टिके भी वार्म क्लाइमेट थिवो and your particularly तमरा मेघालय रे भी होची हैला वेस्ट बेंगल रे भी होची अल्प अल्प जगह बट मेजर जदि तमे देखियो केरला और सिक्किम एठी भी होची बट एंकर भितर सिक्किम हैला तमर कोन particularly your large cardamom particularly large cardamom सिक्किम ठीक है जी large cardamom mainly. Next, in which of the following northeast states Kopoli hydro project Kopili hydro project is located? ठीक है जी, this is your Arunachal Pradesh, Assam, Tripura and Nagaland. हैला Kopoli hydro project is located Arunachal Pradesh, Assam, Tripura and Nagaland. Kopoli hydro project है ना तो मैं आंसर में कह दूँ विल डिस्कस दैट इज बी फॉर बॉम्बे इट इज योर आसाम Kopoli hydro power project Assam ro mainly है ना विल डिस्कस. नेक्स्ट, which among the following is a typical monsoon vegetation in India? Tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and subtropical evergreen forest. Typical monsoon vegetation in India. क्या है मित्रों? Answer to the QIT, this is tropical deciduous forest. B for Bombay. Next देखिए हमें discussion when I mean answers. Kopoli river named after sage
Kapila in the interstate river of northeast India that flows through the your Meghalaya and Assam. Take it out, and is the largest south bank tributary of Brahmaputra, Assam. The Kopili river originates in the Meghalaya plateau. ठीक है, Meghalaya plateau and flows through the central Assam and the hill district of Assam before its confluence with the Brahmaputra. In Assam, it drains the district of Karbi Anglong, Dima Hasao, Kamrup and Nagaon. Karbi Anglong, Dima Hasao, Kamrup and Nagaon. Kapoli गोटे river जोटा कि ब्रह्म is the central Assam, in district Assam. এটা ব্রহ্মপুত্রের সাউথ ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারি. The river flows through a total length পাখাপাখি 300 কিলোমিটার এটা ফ্লো করছে and has a catchment area of 420. आसाम रे जो फ्लड आसे ता भितरु एई कपोली रिवर बहुत फ्लड आने. The catchment area देखे इतनी छोटिया रिवर टे तार catchment area देखे 16,420 है ना. It is noted as the several spectacular waterfalls along its course which has several deep gorges and rapids, है ना, several deep gorges and rapids. Then then it is tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest जति कहबी हैला इंडिया रे tropical deciduous forest मेन deciduous माने मन रख गछ माने पत्र झड़ा दियंती in the autumn season and पुनी से माने spring समय रे तांकर पुनी they re-emerge. It is because all due to your to check the moisture loss. In order to check the moisture loss, trees shed their leaves. ठीक है जी. Tropical deciduous forest are basically possess monsoon vegetation basically. Next, the largest brackish water lagoon of Asia is located which of the following state? Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha. Brackish water की जो it is none other than our Odisha रे Chilka Lake. ये से को lake Chilka Lake. देखिए डिस्कस करिए. कंसीडर द फॉलोइंग क्लोवर माने लवंग, सुगर केन, आखु, अल्फाल्फा गोटे घास. Which of the above are plantation crops? प्लांटेशन करा जाए, कमर्शियल और प्लांटेशन करा जाए. 1 2 माने क्लोव और सुगर केन, then sugar cane alfalfa, then only sugar cane, then all. Here answer is your all, D. All are correct. Discuss करिए. The brackish water lagoon or Chilka Lake of Odisha is the largest coastal lagoon in India, which is home to the number of threatened species of plants and animals. Chilka is the largest lagoon in the Asia. Is the largest lagoon in Asia. Chilka. And the largest wintering ground for the migratory birds, also supports a unique life of marine, brackish and freshwater species. आउथम कहबी चिल्का लेक जदि मैं बनौची
एटी नहीं पर्टिकुलरली देखियो एटी हमर चिल्का लेक रो जोड़ा कि कनेक्टेड हेची गोटे हमर का संग बे ऑफ बंगाल संग कनेक्टेड हेची चिल्का है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक माने खारिया पानी ने फ्रेश प्लस ठीक अछि सलाइन दीटा मिसुची फ्रेश प्लस सलाइन वाटर मिसी होची कोस्टल लेगून इन व्हिच home to the number of threatened species of plants and animals. Chilka is the largest lagoon in Asia. Largest lagoon Asia and largest wintering ground for migratory birds. It is also supposed to unique life of marine brackies and freshwater. यदि गोटे तमरो माने साइबेरियन है ना पर्टिकुलर जब तुम देखिबो Siberian birds. Someone asked them, they came far from Russia, Russia, from Ladakh region, Kazakhstan. They came from this distance, Russia, out Mongolia. They came from far distance. जबकि तमे देखु छो गोटे बर्ड हमर अछि बहुत सुंदर फाल्कन फाल्कन स्पीसीज next today a plantation is a large farm or estate usually in a tropical and subtropical country, tropical and subtropical, where the crops that are not consumed for the food are grown for sale in distant markets rather than the local consumptions. Such crops include cotton, coffee, tobacco, sugarcane, sisal, and various oil seeds and rubber trees. Okay. Farms that produce alfalfa, lespedis, clover, and other forage crops are usually not called plantations. So, plantations kuha jai ni. The term plantations has usually not included large orchards, but has included the planting of trees for lumber. A plantation is always monoculture over a large area and does not include extensive naturally occurring stands of plants that have economic value. Plantation जो term टा not included in the large orchards पे हुए नहीं माने एमाने नो जो orchid सेटा हमानी but has included the planting of trees for lumber पे a plantation is always a monoculture over a large area and does not include extensive naturally occurring plantation पे कौन दरकार गोटे monoculture जो गोटे large area रहा does not include the extensive naturally occurring stands of plants that have economic value. Next देखते हैं 1920 question लिखा कौन दीजिए India has been providing assistance to which among the following neighbors for strengthening and extension of embankments along Lalbakia, Bagmati
and Kamla rivers. Man rakho, these are the very important questions. India providing assistance koruchi which among the following rivers? Lalbakia, Bagmati and Kamla rivers. Ki assistance koruchi? Bangladesh, Nepal, Pakistan and Myanmar. It is answer is your B, Nepal. Then which among the following spreads from Sasaram, Bihar and Rohtas in western Bihar to Chittorgarh in Rajasthan? We discuss kariya sir. These are very interesting questions. Sasaram and Rohtas in western Bihar to Chittorgarh in Rajasthan. Aravalli system, Vindhya system, Dharawad system and Kadapa system. Kia vitru flow korchi? Your answer is your here. It is Sasaram Rohtas. That is your B for Vindhya. Okay, B for Vindhya. Vindhya system है ना? This is Vindhya. देखिए डिस्कस करिए. लाल बकेया एमन सब देखो सब न्यूज रे थिले लाल बकेया बागमती एंड कमला रिवर्स हला लाल बकेया बागमती एंड कमला रिवर्स एमाने समस्त हला कोडी नेपाल रे ठीक अछि एमाने समस्त हले नेपाल लाल बकेया बागमती आउ कमला रिवर ठीक अछि समस्त ए वाले नेपाल रे these are all मन रखो ए सब लाल बकेया बागमती माने प्राय तो बागमती हो कि लाल बकेया माने इंपोर्टेंट माने समस्त ले प्राय गंगारा ट्रिब्यूटरी ठीक अछि विंध्या सिस्टम यदि कहबी जोटा कि है ना ट्रिब्यूटरी जो कि यहाँ पर तमरा बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सब बसुची यहाँ पर जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहूची है ना जोटा कि माने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करिवे दे आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी टू योर नियर बाय ठीक है नियर बाय एचईपी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करिकी नेपाल और भूटान दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट on your India part रे नॉन समनकर इकोनॉमी नेपाल भूटान जति तमे देखिबो नेपाल भूटान रो समनकर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस है ना जेतु समनकर दे आर नॉट ब्लेस्ड विथ द कोल और ऑयल नेचुरल गैस तो समाने इलेक्ट्रिसिटी इंडिया री समाने दे आर टेकिंग दैट वन प्रॉस्पर जो एटा है ना दैट मेक्स जोटा कि हेल्पफुल करे अच्छा विंध्या सिस्टम जति कहबी विंध्या स्ट्रेचेस फ्रॉम
Sasaram and Rohtas in western Bihar to Chittorgarh in Rajasthan. If I draw a diagram here, ठीक है जी, बिहार रु Sasaram ru neki Chittorgarh Dinja is stretching like this one, near about 1100 kilometer, 1100 kilometer pakhabaki Sasaram Bihar ru Chittorgarh in Rajasthan. So it looks like this one. ठीक है जी. Okay, these rocks came into existence year after Kadapa rocks. These are the sedimentary rocks which are built from sandstone, shale and limestone particular. It is सब हमारा commercial significance sandstone, shale and limestone. Consider the following ultra mega power projects and their respective states. UM50 projects and their respective states. Talaiya, Odisha, Shashan, Madhya Pradesh, Vedaval, Jharkhand. ठीक है जी. Talaiya, Odisha, Shashan, Madhya Pradesh and Vedabahal in Jharkhand. The ultra mega power projects. Which of the following is are correctly matched? Only 1 and 2, only 2, only 2 and 3, and 1, 2, 3, all. Answer the देखियो अब through your correctly matched यदि तमे देखियो it is only B for Bombay, Sasan in Madhya Pradesh है ना. देखियो एक्चुअली देखियो तलैया झारखंड और बेदाबाल है ना ओडिशा जदि एटा थांता जस्ट उल्टा दे दी ताले ऑल आर करेक्ट हेतन बट जेहेतु एटा भूल देछि उल्टाटा देछि तलैया ओडिशा दे देला बेदाबाल झारखंड दे देला माने उल्टाटा ही थांता है ना. तलैया झारखंड बेदाबाल ओडिशा तो only 2 is correct. So next देखते हैं ultra mega power project, that is ultra mega power project are very large size projects, approximately 4000 megawatt each capacity. Talaiya ultra mega power project in Jharkhand was recently in news. It was abandoned by the original owner Reliance Power. It is likely to be auctioned by Afresh. Vedabal project is located near Sundargarh district of Odisha. Vedabal project, Vedabal in UNP is located in the Sundargarh district of Odisha.
see the answer बर्तमान देखिए तलैया डैम जोटा अच्छी झारखंड सेटा तुमरा मेनली कहा का पे ये हुए मेनली तुमरा इरिगेशन है तलैया हला तुमरा इरिगेशन इरिगेशन परे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन irrigation electricity production then third ray irrigation electricity production then third ray your irrigation electricity productions and then your particularly for your reservoir है ना reservoir जोटा कि तमरा कौन होची particularly fish productions में यूज होची है ना fish productions में भी मैंने यूज करते हैं ठीक है जी next देखिए next question which region in India is known as the rice bowl of India क्या भितर Indo-Gangetic Plain Krishna Godavari Delta region Northeast region and Kerala Tamil Nadu rice bowl of India क्या भितर Indo-Gangetic Plain Krishna Godavari Delta region Northeastern and Kerala Tamil Nadu rice bowl of जो देखियो हम India actually that is your Krishna Godavari Delta region this is the answer is your B for Bombay we'll discuss next The Duncan Passage is situated between Minicoy and Amenative Island, Minicoy Maldives, Little Andaman and Nicobar, South Andaman and Little Andaman. क्या भितर South Andaman and Little Andaman. क्या भितर Duncan Passage. Answer is your D for Delhi, South Andaman and Little Andaman. Next we'll see Krishna Godavari Delta देखो in India Andhra Pradesh and Krishna Godavari Delta region is called your rice bowl of India है ना कौन पे कहा जाए आंध्र प्रदेश and Krishna Godavari Delta region को कहा जाए the rice bowl of India is the state of Andhra Pradesh कौन है ना it has जो तुम वीडियो डायग्राम बनाओ it will be more clear कहीं आगे कहा जाउची कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को
महानदी गोदावरी एंड कृष्णा ये तीन टा भितर देखियो तमे महानदी गोदावरी और कृष्णा रो ठीक अछि हैला तीनटा देली पर्टिकुलरली एटी बुझो काहे कि मैं जिंस देली त मन क्वेश्चन उठ तो गोदावरी राइस बोल को इत्ते फर्टाइल यदि तुम देखियो गोदावरी और कृष्णा रो को स्टेट आछन गोदावरी कृष्णा रो भी गोदावरी रो जो भी हमर गोदावरी सिस्टम रे हम ओडिसा आछी माने इवन इफ जदि मु मेन जदि देखिबी आंध्रा तमिलनाडु तेलंगाना है ना आंध्रा तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटका है मेजरली और जब देखिए पार्सल तमर आसुची पांडिचेरी भी आसुची ओडिशा पार्ट भी किछि आसुची आउ सॉरी पांडिचेरी में कहूँ ओडिशा हमर आसला महाराष्ट्र आसला महाराष्ट्र ओडिशा फ्यू पार्ट माने और मध्य प्रदेश भी फ्यू पार्ट माने एमाने पार्सल बट मेजरली आसले कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु एंड कर्नाटका इत्ते गुड़ा बड़ फीड करछन कि मेजर गोटे चंक पॉपुलेशन एवटे से माने करछन कृष्णा गोदावरी एबा फर्टाइल प्लस एमानकर कोन साउथ रे दे आर टेक्निकली वेरी साउंड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्शंस है प्रोडक्शन से जदि तमे कहबो ना प्रोडक्शन ऑफ राइस रे दे आर टेक्निकली वेरी साउंड ठीक है जी जेमती हमें देखिबा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान है ना एटा हला तमरो से जुगु समान को राइस बाउल ऑफ पर्टिकुलरली से जो हिस्टोरिकली इट हेल्ड द डिस्टिंक्शन विद इन द आंध्र प्रदेश है ना कौन it is the east godavari district that can be called the rice bowl of india east godavari district roach ना ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट मन रखो जोटा कि वर्तमान आमर जो चीफ मिनिस्टर आसंती है ना जगनमोहन रेड्डी सर है ना मिस्टर जगनमोहन रेड्डी सी भी ईस्ट गोदावरी इज अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट बिकॉज ऑफ देयर राइस बाउल पर्टिकुलर राइस कल्टिवेशंस बहुत हुए डंकन पैसेज कहबे इट इज अ स्ट्रेट इन इंडियन ओशियंस इट्स अबाउट 48 किलोमीटर वाइड पाखापाखी है ना इट सेपरेट्स Rutland Island, part of the Great Andaman to the north, and the Little Andaman to the south. है west of the Duncan Passage is the Bay of Bengal, and east of the Andaman Sea. है ना particularly कौन होची separates Rat Island, part of the Great Andaman to the north, and Little Andaman to the south. Because west of the Duncan Passage is the Bay of Bengal, and east of the Andaman Sea. Several small islands also. है ना डंकन पैसेज जोड़ा कि एटू बनौची देखो एटा हला तमरो पर्टिकुलरली दिस इज योर डंकन है जस्ट होल्ड ऑन नॉर्थ Andaman, Middle Andaman, then South Andaman, then this is Little Andaman, and this is your Duncan Passage. This is your Duncan Passage. है तो South Andaman और Little Andaman मझी रे ही तुम्हारा your Duncan Passage lies there. ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following geographical term related with naturally formed narrow typically navigable waterway that connects two larger bodies of water की भितर peninsula gulf strait and island which of the following geographical term related with a naturally formed narrow typically navigable waterway that connects two larger bodies of water particular peninsula gulf strait and island answer is your C strait
है we'll discuss. Next, which of the following suitable definition of archipelago? Here with through a circular coral reef that encloses a shallow lagoon, a chain or set of islands that group together, the plant and animal life on the earth, none of the above. Archipelago जदि मुझे कहबी इट इज आंसर बी फॉर बॉम्बे है सेठी हला सी इठी हला बी. Strait hela is a narrow passage of water connecting two large bodies of water. Just 1 second. Good typing. Strait जदि कहबो it's an जेमती narrow water joining two large bodies of water, the Strait of Gibraltar for example connects how to Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean. है Strait of Gibraltar कोडी कोडी जंदी गोटे अफ्रीका है अफ्रीका मु करछ अफ्रीका ऊपर यूरोप अछि यूरोप अछि है ई जगह हैला दिस इज Strait of Gibraltar अफ्रीका. Morocco आउ इट हैला स्पेन. Strait of Gibraltar example connects कोडी to Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean हैला एपटे. This is Atlantic Ocean and this is your Mediterranean Sea. This is a narrow strip of sea that links to the larger areas of the sea. Okay. Then a chain or set of islands grouped together. Archipelago, sometimes called as island group or island chain, is a chain, cluster or collection of islands, sometimes a sea connecting a small number of scattered islands. Indonesian archipelago, Andaman Nicobar Islands, Japanese archipelago and the Philippines archipelago. Archipelago धरा जाउची ये Indonesia, Andaman Nicobar Islands, Japanese, Indonesian archipelago, Andaman Nicobar Islands, Japanese archipelago and Philippines archipelago particularly. These are the archipelago mane set of islands grouped together. Next, which among the following is the largest archipelago in the world? Kia Vitru? Largest archipelago. Last two questions here. Which among the following is the largest archipelago in the world? Andaman Nicobar Island, Malaysia, Indonesia and Maldives. Largest archipelago. Largest archipelago, it is answer is your C, that is Indonesia.
है we'll discuss next देखिए which of the following is the world's largest peninsula India South Africa Arabia both हैं largest peninsula यदि हम कहबा it is your Arabia peninsula बड़ सब देखिए वर्तमान प्रथम ये डिस्कस कर दो Arabian peninsula यदि हम कहबी is an earth's है largest spanning 12,50,000 50,000 square miles. It connects to mainland of Asia and is surrounded by the Persian Gulf and the Red Sea and the Arabian Sea in the three sides, तीनटा side रू, as well as the smaller bodies of water. Indonesia यदि कहबा it is the largest archipelago in the world रे Indonesian archipelago which is located in the Malay archipelago between the India and Pacific Oceans. According to Indonesian Ministry of Maritime Affairs, this archipelago made of 17,504 islands particularly. ठीक है The National Institute of Aeronautics and Space, however, reports the number of islands in this archipelago is actually 18. Near about on an average 18,000 to 20,000 भितर archipelago. ठीक है जी. Okay, largest archipelago, Indonesia. Indonesia capital की कह परिबो वर्तमान इंडोनेशिया कैपिटल अछि नुसांतारा जोटा कि आगुरु थिला तमरो इंडोनेशिया रा जाकर्ता जाकर्ता थिला जाकर्ता वर्तमान हिज कोन नुसांतारा पर्टिकुलरली देखिबो तम जदी तमरो बोर्नियो आइलैंड सेठी की पड़ी छि बोर्नियो पाखरे हैला Kalimantan को पड़ी particular Borneo to Borneo or it is in the Kalimantan है ना Kalimantan Borneo पकड़े Kalimantan अच्छी Kalimantan को शिफ्ट है जी ठीक है जी Kalimantan नुसांतारा है ना आओ जब तक मैं आहुरी भी देखियो कहीं की जाकर्ता जोड़ा अच्छी जाकर्ता तमरो नियर इट इज योर जो देखियो सुमात्रा आइलैंड रे सुमात्रा आइलैंड रे तमर जाकर्ता रहे जाकर्ता अछि कहीं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज से माने दे हैव बीन वार्म करछन कि वार्म करछन कि पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ सी लेवल राइज हैला सी लेवल राइज हैला बिकमिंग ए थ्रेट टू साउथ ईस्ट Asian nations and particularly Vartaman Indonesia is vulnerable to this. है ना particularly किए Vartaman Indonesia is vulnerable to this one particularly. है ना ठीक है जी. So we'll meet in the next class. Okay. So till then आज पे इतनी take care. Bye bye. Thank you all of you. Okay. Monday ki padho. We'll meet again. Thank you all of you.